अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बना रहे हैं फ्यूचर के ऊपर, जो आने वाला वक्त होता है। वी विल टॉक अबाउट द फ्यूचर मीन्स दैट टाइम टू कम, यानी चाहे हम कल के बारे में बात करें, चाहे 5 मिनट पहले की बात करें, चाहे 1 सेकंड पहले की बात करें, ये फ्यूचर कहलाता है। उर्दू में हम इसे मुस्तकबिल कहते हैं। As we have been teaching you in our previous video, in this video we will teach you exactly from the same method. You consider our previous video as we taught present and past sentence and taught to use first and second form of verb, and we also told you about the helping verb. तो हमने अब तक जितनी भी वीडियो कराई है उसके अंदर तकरीबन हमने अपना एक ये तरीकाकार दिया है, तो उसमें आप लाजमी जो है ना देखें और सीखें। यू कंसिडर आवर प्रीवियस वीडियो, तो जैसा कि हम करा रहे हैं तो उस पर जब तक आप गौर नहीं करेंगे तो आपको आगे समझने में मुश्किलात दरपेश आएंगी, तो ये लाजमी आप देखते रहें। लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर सेंटेंस। In future sentence, we will use will, the helping verb will and shall. Will and shall means ga gi ge in Urdu language. In Urdu sentence, we will use ga gi ge at the end of the sentence. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके shall की। तो shall जो है, इसको तकरीबन लोगों ने यूज करना बंद कर दिया है। will और shall के मतलब एक ही है। तो अब आप बुकों के अंदर जितनी भी किताबें हैं, आप जो है ना न्यूज वगैरह इनमें देखेंगे तो यहाँ तकरीबन शेल लिखा हुआ नहीं आता। ज्यादातर लोग डबल एल बना देते हैं, ऐसे करके ये बन जाता है। तो हम कहीं पर भी अगर कुछ लिखे तो ये जो लिखा था इसका मतलब इनमें के विल और शेल है दोनों। तो मतलब जब एक ही है तो इसलिए शेल का इस्तेमाल लोगों ने तकरीबन बंद कर दिया है। वी आर नॉट यूज द शेल। Now we will use the helping verb will immediate after the subject, and let's talk about the verb. The verb जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, we will use first form of verb. तो इस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो इसके अंदर हम आपको वर्ब बताएंगे कि तकरीबन जो कितने वर्ब इसमें 2-4 हम इसमें लिखकर आपको बताएंगे कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। Let's talk about the verb. First form eat, go, come, jump. These are first form. जितने भी फर्स्ट फॉर्म होती है इसके बाद सेकंड फॉर्म बनती है, फिर थर्ड फॉर्म बनती है। तो हमने आपको जैसे कि हम वी हैव टोल्ड अबाउट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन आवर प्रीवियस वीडियो, तो उसमें हमने जितने भी आपको सिखाए तो तकरीबन आप उसमें समझ चुके होंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, सेकंड फॉर्म किसे कहते हैं। फ्रेंड, we have written some sentence on the board. तो यहां हमने ब्लैंक दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, पढ़ते हैं इसको। My mom blank the breakfast. Add more. तो हमने इस टेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो अब हमने देखना है कि सबसे पहले हम यहां क्या लिखना है। We will use the first helping verb. Helping verb is will. Immediate after the subject use किया हमने will. अब यहां पर हमने इस्तेमाल करना है verb. In this sentence we will use first form of verb. First form इसकी है, हम लिखेंगे make. ठीक है, माई मॉम विल मेक द ब्रेकफास्ट फॉर मी। अब आप नेक्स्ट की तरफ आते हैं, तो इस सेंटेंस का हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। टू मेक नेगेटिव सेंटेंस वी विल यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट आई विल राइट विल, नॉट। I will not go to school. Verb go. I will not
go to school. I will translate in Urdu language. मेरी वालदा मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा. We have written some sentence more. इसका सबसे पहले हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव. तरीकाकार वही है. तो हेल्पिंग वर्ब विल यूज बिफोर सब्जेक्ट. And after the subject we will clean. इसका हमने बनाया इंटेरोगेटिव. Will he clean car? Will he clean the car? क्या वो गाड़ी साफ करेगा? तो हम सवाली निशान लगा देते हैं यहां पर. इस तरह हम इसका बनाएंगे interrogative and negative sentence. The helping verb will use before subject. After subject, not. And I will use the first form of verb, I think, go. यूज करते हैं कम. क्या वो गाड़ी साफ करेगा? क्या मैं ऑफिस नहीं आऊंगा? We will explain to you an important thing if we use so between the two sentences. The two sentences will be bigger and our sentence will be complete. I read, my mom will make the breakfast for me, so I will go to school. This sentence is complete. Come down. He will clean the car. I will come to office. I will use so between the two sentences. He will clean the car, so I will come to office. I will translate in Urdu language. मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, तो मैं स्कूल जाऊंगा. Look, he will clean the car. He will come to school. वो कार साफ करेगा, तो मैं ऑफिस आऊंगा. This is future indefinite sentence. Will the first form of verb eat. Ga, gi, ge, make, eat. These are identity of future sentence. तो ये गागी ये फर्स्ट फॉर्म है. इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर सेंटेंस का जुमला है. अगर हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो समझ लो फ्यूचर इनडेफिनेट सेंटेंस का जुमला है. इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब एंड लाइक.